Hello, how are you all? I hope so that you all are in good health. Today we are going to talk about the different elements of report. The first point is a description of sequence of events or situation. That there should be a sequence of events or situation where you are going to write a report. Jumble नहीं करने अपने ideas को. You will not jump from one idea or to the other one. There should be a coherency of the sequence. एक sequence में एक flow में चीज़ें जा रही होंगी, उनके events और जो situations है उनको describe करना है, उनको एक sequence में आप लोगों ने describe करना है, ठीक है? Second point is interpretations of significance about the events or situation. अब ऐसे पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको जस्ट आप लोगों ने छोड़ नहीं देना रिपोर्ट लिखते वक्त, बल्कि यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट. उसको अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, इंटरप्रेट करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और सिचुएशंस होंगी, राइट? देन थर्ड पॉइंट आता है वी इवेल्युएट द फैक्ट्स रिजल्ट्स ऑफ आवर रिसर्च. क्योंकि रिसर्च का मतलब यही है कि अपने आप लोगों ने फैक्ट्स देने हैं. आप लोगों का जो राइटिंग होगी वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो फैक्ट्स पे बेस करनी चाहिए. तो हम लोगों ने जो चीज़ें एनालाइज करनी है वो फैक्ट्स और फिगर्स को देख कर ही करनी है. फोर्थ पॉइंट आ जाता है वी डिस्कस द आउटकम ऑफ फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन. इसलिए हमने बताना है कि दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्शन शुड वी टीच इन फ्यूचर एंड व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दोज एक्शंस. कि हम लोगों ने फ्यूचर में कौन कौन से एक्शंस पे अमल दरामद करना है, कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिनको हम लोग ऑप्ट करेंगे, देन वी कैन गेट गुड और पॉजिटिव आउटकम, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट हमारा जाता है we give the recommendation as to a course of action. इसमें यह है कि here it means that whatever we written in a report by making a research, we try to come up with some ideas that how can we make it more better and progressive or the radical. Through the text on the basis of our research, we analyze the different events or the situation of the past and need some recommendations to make it more positive and progressive. हम लोगों को कुछ इस तरह की क्लूज चाहिए होते हैं, हमें कुछ इस तरह की स्टडी, इस तरह की सिचुएशन चाहिए होती हैं जिसको हम लोग पास्ट की बेस पे एनालाइज करते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर में वो काम ना कर सकें. एंड एट लास्ट देयर इज़ अ कंक्लूजन का मतलब तो आपको पता होता है कि हम लोगों के एलिमेंट्स के रिपोर्ट के एलिमेंट में कंक्लूजन इज़ मस्ट. अगर हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग अगर उसका स्टार्ट लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसका एंड भी होना है. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर कंक्लूजन. नेक्स्ट इज़ अबाउट द कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. द फर्स्ट वन इज़ टाइटल पेज. So title page is basically the first page of your report in which you are going to write the title of your report or the name of the writer. And secondly, the language should be clear in your title page because the first impression is the last impression. So first page or the title page should be error free. Spellings mistake नहीं होने चाहिए, grammatical mistakes नहीं होने चाहिए, and use of the words should be also accurate, can be easily understood by the readers as well. As you can see that and the title itself is an important opportunity to tell the potential reader what your research is going to be about. आप लोगों को एक किस्म की opportunity दी जाती है कि आप अपनी audience को बताएं कि that what you are going to discuss in your report. So title page is a very much important thing. इसका जो फॉर्मेट है वो भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स. Table of contents, it is the list of discussion which we have done in the report and tell us where the chapter or the page number is, like headings, subheadings. So ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में हेडिंग, सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हैं उनको बनाने की कोशिश की है सो डैट यू विल अंडरस्टैंड इट. सबसे पहले हेडिंग होती है. हेडिंग में हम लोगों को एग्जांपल गिवन, हम लोग कोई भी टॉपिक चूज़ करते हैं, एनालिसिस एंड डिस्कशन, ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग वाली जगह पे लिखना है. फिर उसके बाद अगर हम लोग लिखना चाहते हैं सब हेडिंग, तो सब हेडिंग में हम लोग उसको कहेंगे 5.2, जिसमें हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस लेवल के बारे में हम लोग बात करेंगे. फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है सब हेडिंग्स, जिसको हम लोग नाम देते हैं 5.2.1 मीन स्ट्रेस, मीन्स कि हम लोगों की जो नेक्स्ट हेडिंग वो इस तरह से हो जाएगी. इसके बाद फर्दर सब डिवीजन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है. तो मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आर टाइप्ड क्लोजर विद लेफ्ट मार्जिन. इनको लेफ्ट मार्जिन की तरफ टाइप किया जाता है. और गिव टाइटल फॉर ईच चैप्टर एज सेंसिबली एज पॉसिबल. उसको अपनी सेंसेस को यूज़ करना पड़ेगा. then it will be possible to give a proper heading, subheading and subheading, right? So I'm going to erase it, messy हो जाएगा वरना. All right, so here is the highlighter. The third point is about the summary or the literature review.
Summary: it is the short and the brief structure of the report, that what a person is going to present in his or her specific report, or the main idea of the report. There should be proper beginning, which will be the continuity of the words, and it will also help you that how a person is going to present or explain his ideas to the people. Summary का मतलब ये होता है ना कि brief और to the point बात होनी चाहिए. So इसमें ideas बंदा अपने explain कर सकता है. The abstract should be placed immediately before the first chapter of the report. It should not be more than 300 words. ये जो हमारी summary है इसको हम लोग abstract भी कह सकते हैं. And it should take the form of a short factual statement. Then comes the turn of literature review. Purpose of this content is to show that you are aware where your own piece of research fits into the overall contents of the research in your field. It describes the current state of your research. Then fourth one is introduction. Although this is the first piece of your writing, the reader comes to. पहला एक होता है part जिसको reader को पढ़ना चाहिए, because the word itself tells us that it is an introduction. But it is often best to leave its preparation to last, as until then you will not be absolutely sure that what you are going to introduce. So इसमें क्या क्या बातें आ जाती है? Background of the study, statement of the problem. Number 3, research questions होने चाहिए इसमें. Number 4, objective of study होना चाहिए. Or number 5, limitations. And in that part we tell the people that what we got for them, why we are writing and what we are writing, why people should read this piece of writing, and what is the speciality of your report. So introduction में हम लोगों को ये सारी बातें करनी आती हैं. Then आ जाता है body. Body का मतलब है कि it aims is to solve the problems, raise some questions and solve them. We may add the audiovisual aids as well. It should be appropriate for the readers. कि body में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. इसमें हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स भी ऐड कर सकते हैं. Number 6 is conclusion. The closing of the report, it is also called the closing of the report, and it should be well crafted, means that it should conclude each and everything whatever we have discussed in the body of the report. The conclusion tends to be much shorter than the discussion. It is not a mere summary of your research. ये नहीं है कि आप लोग just start ही हो गए and you are writing more and more words. बट इस तरह के मैनर में लिखा जाए कि हम लोग किसी चीज़ को कंक्लूड करें. अ ब्रीफ समरी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी. एंड द लास्ट वन इज रिकमेंडेशन. Recommendation, the word itself tells that it is about the future, that what kind of steps we can take to make it more progressive and positive. 2 forms: recommendations for future study or recommendations for the change, or we can use them for both. Each recommendation should trace directly to a conclusion. Recommendations जो हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि हमें वो conclusion की तरफ lead करें. The next is style of writing a report. ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं. So first point is be precise and effective. It should be to the point, brief, and not be in much detail. We should use simple language and simple structure. Second is be brief and to the point. We should write short and straightforward report. We should not use heavy words or condensed a lot of words while reporting a report. Make it concise as much as you can. Then third point is be clear. Be clear about your thoughts, about your ideas and the feelings that we are going to express. We should use right, correct language and grammar so that the other person can understand us. That what are the things which are going in our mind. हम लोग उनको अच्छे तरीके से समझा सके, रीडर को हम लोग बता सकें that this is the thing that I'm going to talk about. उसकी ambiguity नहीं होनी चाहिए आप लोगों के words में. Then fourth point is be human. Be human का मतलब है कि you should feel, behave and express like others. Think like others for whom you are writing, and put yourself in other side. By this way you can make your report effective. Feel करना चाहिए because you are writing for the people, for your audience. तो हम लोगों को बी ह्यूमन का मतलब है कि हम लोगों को फील करना चाहिए. ये नहीं है कि बगैर फीलिंग्स के हम लोग लिख रहे हैं, कोई हमारे एक्सप्रेशंस नहीं है, कोई मतलब कि कोई हमारी फीलिंग्स नहीं है, बगैर सोचे समझे लिख रहे हैं. You should be human in your writing. Number 5 is numbering. That how do you number the things like 1, 2, 3, 4, then subheadings 1.1, 1.111, 1.111 and 2.1, 2.11. तो इस तरह की हमारी नंबरिंग होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में जा रही हो. जैसे पहले में मैंने बताया था कि हेडिंग सब हेडिंग्स वाली बात. अदर कन्वर्सेशन, इसका मतलब है कि व्हाट विल यू प्रेजेंट, वेदर इट इज़ अ सिंगल कॉन्सेप्ट और द डुअल कॉन्सेप्ट.
Second, how to use page, like you have to leave left page or draw line of 25 millimeter. Which number of page we are using, you have to be careful about different headings. और फिर अदर कन्वर्सेशन में और भी मतलब कि कंक्लूजन आ सकता है, रिकमेंडेशन आ सकते हैं, जिसकी हम लोग पहले भी बातें कर चुके हैं. स्टाइल ऑफ राइटिंग की एंड में वो चीज़ें भी आ जाती है. रिकमेंडेशंस में होगा कि नंबरिंग ऑफ द रिकमेंडेशंस, दैट हाउ वी आर गोइंग टू गिव नंबर्स, कि हमारी रिकमेंडेशंस किस किस सीक्वेंस पे होनी चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.